Hello everyone. So as we all know that only 40 days are left for upcoming INICET exam, so today we'll be discussing the preparation strategy. And as far as INICET is concerned, जो लोग INICET की पर से प्रिपरेशन कर रहे हैं, it is the video for them. And for the people जिन्होंने नीट दिया एक satisfactory range में रैंक नहीं आई but they are still going for the counseling, I would suggest कि just give your shot in the INICET because वन थिंग इज कि जब तक नीट की काउंसलिंग खत्म होगी तब तक आईनीसेट का आपका एग्जाम भी हो जाएगा, रिजल्ट भी आ जाएगा. सो यू विल बी हैविंग एन एडिशनल बेनिफिट कि अगर आईनीसेट में अच्छी रैंक आ गई देन यू कैन टेक द कॉलेज फ्रॉम हियर, अदरवाइज आपके पास नीट की सीट तो है ही. And also, since you were very well prepared for the NEET PG and some shit happened, so you can just try and give a shot in the any setting there. So as far as the preparation strategy is concerned, first of all, you should be focusing on the revision part. So since 40 days are left, I would suggest कि जो भी आप revision कर रहे हो, just complete it within next 25 days, and last 15 or 10 days में you have to brush through all the 19 subject once. One part is this. Another thing is you should be practicing PYQs. अगर आप क्यू बैंक सॉल्व करने का सोच भी रहे हो, आई वुड सजेस्ट कि एक बार PYQs दोबारा कर लो, बिकॉज INI set में there is a great tendency कि PYQs would get repeated and especially the PYTs. तो PYQs से भी अगर direct question नहीं आ रहा then PYT से definitely question आएगा. And also PYQ से जो question आएगा, अगर same question repeat हुआ तो it would save a lot of time for you in the exam because उस question पे आपको ज़्यादा focus नहीं करना होगा. Other than that, for practicing the PYQ, I would recommend if you can use the Reflex app because it's a PYQ only app and also it has last 10 years PYQ. So there is a great tendency कि वहाँ से questions आए and the explanation there is very crisp and it is also a very economical app, so you can try it. Apart from it, you can give GTs. अभी next 40 days में at least you can give 2 GTs and last के 20 या 15 days में you should avoid giving GTs because it would take a lot of time जो आप रिवीजन में इन्वेस्ट कर सकते हो. ऑल्सो उस टाइम पे आपका रैंक थोड़ा ऊपर नीचे आएगा तो इट कैन ब्रिंग डाउन योर कॉन्फिडेंस एज वेल. एंड द लास्ट थिंग इज, अगर आपने 20th कॉपी अभी तक बनाई हुई है, वेल एंड गुड, कीप ऑन रिवाइजिंग इट ऑन अ डेली बेसिस और ऑल्टरनेट डे बेसिस. अगर नहीं भी बनाई हुई तो विद दिस रिवीजन ट्राई टू कीप अ कॉपी विद यू एंड add volatile things in it, so that you can revise it during last 10 to 15 days because there's this thing कि our brain tends to forget things and it's a very natural phenomenon. But क्या होगा कि अगर आपके पास एक एडिशनल कॉपी होगी जिसमें सारी वॉलेटाइल चीज़ें हैं, you can very well revise them because concept वाली चीज़ें तो are one thing that we can remember for long time. Like it's been like 4 years before I gave my PG entrance exam. Still उस टाइम पे unrelated subject जैसे I am a medicine person or a cardiology person, so unrelated subjects like surgery, gynecology में भी जो concept वाली चीज़ें हैं I still remember them. But जो भी रटने वाली चीज़ें हैं वो तो मेरे को 10 दिन भी याद नहीं रहती. So that is one thing. So try to revise the 20th copy during the last 10 days and stay calm. You can definitely score a very good rank. All the best.